independent of the other terms of the contract, and a decision by the tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. As per section 16 subsection 2, a plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than submission of the statement of defense. However, a party shall not be precluded from raising such a plea merely because that he has appointed or participated in the appointment of an arbitrator. Subsection 3 provides that a plea that arbitral tribunal is exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of authority is raised during arbitral proceedings. Okay. Now this entire section is related to the jurisdiction of the tribunal. मैंने पहले भी बताया होगा, jurisdiction can be of two types. Okay, jurisdiction can be of two types. One, the area. If the arbitral tribunal falls in the area where the crime has taken place, only then the tribunal can entertain it. Or second, some tribunals are allowed to deal with the cases where the punishment is limited to a certain amount. Like suppose two people enter into a contract, okay, and one person does not follow the contract or one person breaches the contract, ठीक है, and the punishment for such breach is rupees 1 lakh. Now only those crimes जिसका punishment is limited to 1 lakh can be entertained by certain tribunals. Okay, it cannot be entertained by all the tribunals. तो ऐसा होता है हर केस में ना, jurisdiction होता है. नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का तो कोई jurisdiction नहीं है, वो हर चीज को एंटरटेन कर सकते हैं. सिविल कोर्ट का होता है. सिविल कोर्ट का कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर्स का कैसा होता है. अगर आप सपोज एक एरिया में रहते हो, उस एरिया में मर्डर हो जाता है, तो आप उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके केस फाइल कर सकते हो. आप दूसरे एरिया में तो नहीं जाओगे. अगर आप दूसरे एरिया में जाओगे तो क्या बोलेगा, अरे ये हमारे एरिया का मैटर नहीं है, उस एरिया में जाओ जहां पे क्राइम हुआ है. तो ये एरिया का मतलब क्या होता है, लॉ की भाषा में एरिया मतलब ज्यूरिसडिक्शन. तो कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जिनके पास उसी एरिया का केस जा सकता है जहां पे क्राइम हुआ है और कोर्ट भी उसी एरिया में है. एंड कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, द कोर्ट्स कैन एंटरटेन ओनली दोज मैटर्स जिसका पनिशमेंट 1 लाख रुपए तक है, जिसकी सजा 2 साल तक है. ऐसे मैटर्स ही कुछ कोर्ट्स एंटरटेन कर सकते हैं, सारे मैटर्स नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब सबको समझ में आया? Everyone has got a fair idea Yes, what ma'am. are we going to study. We are going to study about jurisdiction. पूरा सेक्शन क्या बोलता है, पूरा सेक्शन बोलता है कि अगर आप है कि जिस ट्राइब्यूनल में हम केस लेके गए हैं, ये केस उस ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, तो उसके बारे में आपको पहले ही बोलना है. यू हैव टू रेज एन ऑब्जेक्शन ऑन दैट. And if you raise an objection within a particular time, then it is fine. But beyond a particular time, तो आपका वो जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, समझा सबको? I'll explain the entire section, but have you all got a background about it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Before we move forward, just write the meaning of the word ipso jure. Ipso jure. Uh, ipso jure is a Latin phrase. Ipso jure is a Latin phrase used to describe ipso jure is a Latin phrase used to describe legal consequences that arise
by the mere operation of law. That arise by the mere operation of law. Ipso jure is a Latin phrase used to describe legal consequences that arise by the mere operation of law. Ipso jure का एक्चुअली मतलब होता है by the law itself. अगर शॉर्ट में मतलब समझना है, by the law itself. Ipso jure means by the law itself. Have you all written? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So what does section 16 say? That first of all, arbitral tribunal can form its own jurisdiction. Arbitral tribunal खुद decide कर सकता है कि उसका jurisdiction क्या होगा. ठीक है? It deals with the competence of deciding its own jurisdiction. Second, the arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including ruling on any objections with respect to the existence or the validity of the arbitration agreement. So suppose I and Sayoni, we enter into an arbitration agreement that we want to get an arbitration done. Now, now we take that arbitration agreement to the arbitrator कि हमको हमारा झगड़ा सुलझाना है. Now, arbitrator has to decide whether he or she can entertain this agreement, whether that arbitration agreement is valid, whether there are some objections on the arbitration agreement. All this can be decided by the tribunal. मतलब ट्राइब्यूनल को या आर्बिट्रेटर को लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे एरिया का काम नहीं है, so he is the person to tell ki no, you should go to some other area. So whether to raise objection, whether to entertain a particular case or not, everything is in the hand of the arbitrator. ठीक है, समझ में आया? They themselves decide their area, they themselves decide the validity of the arbitration agreement, the clauses of the arbitration agreement. Okay, have you all understood the first paragraph? Yes, ma'am. हाँ, एंड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो मैंने आप लोगों को बोला था कि आर्बिट्रेशन का क्लॉज इंडिपेंडेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है या आर्बिट्रेशन का अलग से अग्रीमेंट बन सकता है. ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का क्लॉज जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उसको अग्रीमेंट मान के चलना है तो वो भी ट्राइब्यूनल मान सकता है. And a decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not, by law itself, shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. Now, if abhi suppose me and Bhavya enter into a contract, okay? Now this contract is null and void. In the same contract, we have written about arbitration clause also, that if tomorrow something goes wrong, we can go for arbitration. Now, when both of us go to the arbitrator says ये तो agreement ही गलत है. This contract itself is null and void. Now, since the contract is null and void, will not make that arbitration clause null and void. It will not make that clause because of that clause only we are going to the arbitrator. So if the tribunal decides that the contract is null and void, it shall not by law itself invalidate the arbitration clause. Because the contract was invalid, it will not make the arbitration clause invalid. ये right भी आर्बिट्रेटर के पास है डिसाइड करने के लिए कि वो ऐसा डिसीजन तो दे सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, but if he declares the contract null and void, it will not by law declare that clause of arbitration in that contract as invalid. समझा क्या? Yes, ma'am. Okay. And what does subsection 2 say? Subsection 2 बोलता है
that whenever you watch